right? And today we are going to discuss recent advancement or recent trend in computer-aided drug discovery. And as Dr. Puransi Solanki sir said me to be simple and be, mixed language, English and Hindi. So wherever you receive any issue with my language or any term that is not familiar to you, you are free to ask me, right? And believe me, I am as well simple, not much complex as individual as well. So thank you for the being here as a participant of this computer aided drug discovery session. First, before the beginning of advancement or something in computer aided drug discovery, first I would like to discuss why computer aided drug discovery. We all are aware that drug discovery is important, and we must understand that drugs or medicine is an integral part of maybe animal life, including humans and other animals as well. And not this is something new, like we are using only drugs. Even our any era, any time, or any civilization use medicine, maybe in a different form, maybe as a plant part, or maybe as a extract of plant, or maybe as a food. So medicine or drug is nothing new to the civilization. In any civilization, medicine is there, and people use some maybe plant part or plant extract or different form of natural resources to treat some diseases or to strengthen the power of any human being or animals. Because if there is a life, there is a disease, there is a problem, there is a some ambiguity, disease, ambiguity, weakness, everything is there if there is a life on the earth. So vice versa, drugs is also available there. The form of drugs, the methods of drug processing is different, doses are different, study of drugs and discovery of drug process is different at the different era or different civilizations, but drug discovery and drugs are there even thousands years ago as well. And during the course of time or during the advancement of time, we refine our discovery process, we redefine the doses, we redefine the application of maybe same natural product or maybe some introduce some new natural product as well, right? So if we talk in Hindi, then ड्रग एंड मेडिसिन हमेशा था इस धरती पे, तरीके अलग अलग थे उसके यूज करने के, और ड्रग कैंडिडेट अलग अलग, लेकिन ड्रग्स थे। और आज जिसे हम एडवांसमेंट बोल रहे हैं, मे बी वो कल आउटडेटेड होगा और आने वाले टाइम में कुछ और नए टेक्निक, कुछ नए अप्रोच, कुछ नए प्रोसेस, कुछ नए मेथड्स आएंगे जिसे जो कि एडवांस होगा, बेस्ट यूटिलिटी होगी उसकी, और उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी और टॉक्सिसिटी कम होगी। ड्रग्स के बारे में हम लोग बात करें, जब भी हम एडवांसमेंट की बात करते हैं, ड्रग एडवांसमेंट की बात करते हैं, देन ड्रग एडवांसमेंट का टू मेजर पैरामीटर्स हैं। नंबर वन, the activity. We always require higher activity of a drug molecule so that in the less amount, less quantity, we can get more result and more activities, right? And another part of drug discovery, advancement in the drug is to minimize the toxicity, to minimize the side effect of any drug molecules, right? So these are the two criteria of drug advancement. If we talk about
The drug discovery methods advancement means advancement of process or methods of drug discovery. Then there is a another criterias like cost effectiveness, labor effectiveness, and maximum utilization of any compounds. Means to reduce the waste portion, we are discovering some molecules, and in the process of discovery of any active molecule, we are wasting lots of natural resources. So this is not advanced, or this is not a acceptable method of drug discovery. So if we talk about the advancement in the method of drug discovery or trends, novel trends in advancement of computer-aided drug discovery, then these three criteria is important. Number one is the cost saving, because we always need require cheaper medicines, right? And wastage minimizations, and always the effective compounds, effective candidate is required in this process. Before moving to further, uh, we discuss the drug discovery process. I hope you understand this well, because in earlier lecture you must have studied this. So disease related genomics or proteomics. We need genomics or proteomics, rather better way we call it omics, that includes genomics, proteomics, and metabolomics. I hope all of you aware about genomics, metabolomics, and proteomics. Those who are not aware about these terms, that is, genomics is for the genetic material study. Proteomics is study of entire set of protein available in our bodies, and metabolomics is study of entire set of metabolites and their interactions in our body. So this is and basically these are called collectively called, एक साथ हम इन तीनों terms को omics बुलाते हैं, omics term use, right? Because omics is a common in all these three words: genomics, proteomics, and metabolomics. So this omics study be required to understand the target protein, to identify the targets of a medicine. Suppose we are developing or discovering some medicine, then first we need to identify the target. So number one thing that we required is target. And omics study also, reveals the disease mechanism as well, how disease is proceeding, how disease is, you know, uh, occurring, and what are the mechanism, what are the steps involved in this disease. So these omics, help us to explore these things about the disease mechanism, and as well as this omics study give us target identifications pathway, right? And the next is the target identification. So for target identification, bioinformatics, reverse docking, and computational chemical biology. Computational chemical biology is more or less similar to the bioinformatics, where we use computers to study biological process, that is computational biology. And next is the target validation, as I told you. So target validation, suppose after the omics study or after the literature study, you identified some target, right? Then you need to validate that. Means need to validate the targets, right? That whether you have selected the target is right or wrong. ऐसे भी हम लोग वैलिडेट करते हैं किसी भी सिलेक्शंस को। फॉर शायद आप फर्स्ट टाइम में भी, अगर आप फॉर शायद इस वर्कशॉप की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, तो जब आपने पहली बार इसको सेलेक्ट किया होगा, आइडेंटिफाई किया होगा कि यस दिस इज आई मीन ट्रेनिंग और वर्कशॉप फॉर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी, देन यू स्टार्टेड वैलिडेटिंग दिस, आई मीन which organization behind this training. So yes, you've seen that BSR is there. So you understand that yes, BSR is a reputed institute, so they will deliver good. So I mean, this way we validate the things in our day-to-day life as well. And similarly, in identified target, we validate that whether whatever criteria we have set for the selection of target, whether
this selected target meet all these criteria or not. So this is the simply validation process. For an example, I identify some drug target protein, that XYZ protein is important in this particular drug disease mechanism. And suppose this target protein is inhibited, then maybe this disease will be stopped, or this disease can be checked, or some drug molecule can be developed against this drug target, right? So we need to validate, we need to check whether this target is really a key protein of that disease mechanism or not, or whether we can stop this protein using some drug molecule or not. So this way we work for the validations. Many other processes like virtual screening, de novo designing, etc. is there. We will study these things in our further lectures. We have dedicated, session on target identification, validations. As we will move forward, we will study these things. So those who are not getting these things, don't worry about much about these things. We will study each and everything here written here, right? Another is lead discovery. Lead discovery means lead drug molecule discovery. So virtual screening and de novo design is there. And again, after the lead discovery is equivalent to target identification part. Again, we need to optimize the lead molecule. Likewise, we validated the target proteins. So lead optimization, focused library design, drug-like analysis, etc. Then we move to the preclinical test, right? Preclinical test includes both in silico as well as wet lab experiment also. So we are talking about computational approaches. So here we will discuss only the computational approaches. So in preclinical test, in silico admit prediction. Admit is the toxicity prediction basically. A for absorption, D for resorption, M for metabolism, E for excretion, and T for toxicity. So there is plenty of tools, online tools available that you can use for admit prediction. We have, further session on this. So there we will try. Physiological based pharmacophore simulation, pharmacokinetics simulation. So there is a tools available for PBPK calculations as well, and computational system biology, where we study the whole mechanism of discovered lead molecules, how these molecules move into our body system, and how they react with a different part of our system. Even in this system, we understand the interaction of the body, interaction of the target protein with the lead molecules. Lead molecule, usually we call any molecule lead that is not assured with as a drug. Just we are there is a hypothesis that this molecule can be work as a drug, but it to be not confirmed as a drug molecule. So usually we call these molecules as a lead molecules. Uh, Usually in our day to day life we call it मुझे एक lead मिला है. Lead मिला means हमें एक hope मिला है, कुछ ऐसे idea मिला है कि ये ऐसा काम कर सकता है. So this way we call it lead molecules. Until and unless the entire mechanism is not studied, entire interaction is not studied, and at least preclinical validation is not done, we cannot call any molecule as a drug, right? So we usually call it lead molecules. Going further, here I introduce a short definition of computer-aided drug discovery and all. Hope you are aware about this. So computer-aided drug designing, or discovery, or development. More or less, all these terms are similar, whether we call it designing, development, or discovery. There is nothing different. Maybe different person choose their words differently, but all are having the same meanings. So computer-aided drug designing discovery is a discipline which is based on computational method and technology. As name suggests, means computer-aided drug discovery is based on in silico study, computer study. That's all.
Short form, we call it CAD. So CAD depends on areas such as computational chemistry, bioinformatics, combinatorial library, design, information management and technology, molecular biology, genomics, and other new and emerging field, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, other emerging new field. देखो, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी की जरूरत इसलिए पड़ा कि जो ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी मेथड्स थे, जिसको हम आज ट्रेडिशनल बोल रहे हैं, एंड बिलीव मी, आज के 10 से 15 साल बाद जिसे हम आज एडवांस बोल रहे हैं उसे लोग ट्रेडिशनल बोलेंगे. ये आई मीन, दिस इज द रूल ऑफ नेचर, ऐसे ही होता है. Likewise, today we are young, then maybe after 10-20 years we are old, and the younger generation will call us old men or old women. So this is the law of nature. Anyway, so traditional drug discovery methods are very costly because involve many manpowers, and they are very time consuming because you need to test each and every drug on different animal model or different laboratory models, and extraction process is also very tedious and obviously not the environmental friendly. But over this, these computational methods, even the basic computational methods, are very time effective, cost effective. Obviously, when time is less, then cost will be also automatically reduced. And because we are not using any animals or any chemical molecules, we are just using our computer. So we are very cost effective and time effective and labor effective as well. One person, can screen millions of compounds using a single computer or server, sitting on their desk. Okay. But even the 100 or 1,000 molecular screening in wet lab is a very tedious task. Right? You need to type it every multiple times, different concentration and all. So these are the A's over this computation technique. इतना तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी begins to save the time, to ensure the cost effectiveness and labor effectiveness, as well as uh, you know uh, for the perfections, right? Because the manual works have many chances of error, and we need many trained manpowers, and the software and computer is just opposite to that, right? ना तो आप समझ गए. ऑब्वियसली जब हम एडवांसमेंट की बात करेंगे, ट्रेंड्स की बात करेंगे, तो इन्हीं क्राइटेरिया पे आगे जाएगा. मीन्स एडवांसमेंट जो भी इस फील्ड में होगा ड्रग डिस्कवरी के लिए, वो टाइम सेविंग की ओर होगा, कॉस्ट सेविंग की ओर होगा, और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, परफेक्शन को अचीव करने की ओर होगा. मतलब थ्री डायरेक्शंस में ही एडवांसमेंट जो है वो डिजायर्ड है इस फील्ड में. कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी में अगर हम बात करें तो आगे जिस भी टेक्निक की हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं फील्ड में होगा. अब यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि एडवांसमेंट इज यू नो not always discovery of or introduction of something new technique or something new approach. Even speed of computer, suppose, increased, the space in a computer is increased. This is an advancement as well. If the visualization technique is improved, if the graphics is improved, this is advancement. If application of any software is easier, और शेड, पहले आपको याद हो कि जीयूआई बेस्ड टूल्स ड्रग डिस्कवरी में इसमें बहुत कम थे, लिनक्स बेस्ड टूल्स ज्यादा थे. नाउ इट इज इवन फॉर ओमिक्स एनालिसिस, विंडो बेस्ड टूल्स आर अवेलेबल, विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल. सो दिस इज एडवांसमेंट एज वेल. So we don't think always that advancement means introduction of something new, tools or new approaches only. Even in the existing approaches, even in the existing tool, improvement is an advancement. Okay? जैसे इफ आई रिमेम्बर, या जो हमसे भी पुराने लोग हैं अगर वो याद करें,
तो कंप्यूटर इज नॉट एन कॉमन थिंग अर्लियर, बट आज तो एडवांस कंप्यूटर इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस. अगर आप में से जितने लोग बैठे हैं, आई होप ऑल ऑफ यू हैविंग द लैपटॉप, कंप्यूटर एंड मे बी i5 एट दिस, राइट, i5 जनरेशन. बट आप बात करो ना, आज के 15-20 साल पहले तो i5 कंप्यूटर इज नॉट अ यू नो easy things. So this is as well the advancement of the tech, right? Nowadays, even in the institutions, organization, we have, I mean, advanced computing facilities, servers and all. तो अगर हम सॉफ्टवेयर पार्ट पे भी बात करें, तो लिमिटेड सॉफ्टवेयर होते थे, 1 or 2 सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते थे एक किसी टास्क के लिए. बट nowadays, just you click, I mean, search in Google and you will get plenty of softwares, plenty of platform for any kind of prediction or study. So this is advancement, or this is uh, improvement in the system or whole ecosystem. We can call it, this is the advancement of ecosystem. And the biggest advancement I believe in this field is acceptability. Many of you, maybe, I don't know, aware or not, people are not accepting these things earlier. अच्छा, इन सिल्को वर्क है, कंप्यूटेशनल वर्क है, ओ नहीं नहीं नहीं, पता नहीं सही है या नहीं. But nowadays, this is not a challenge. Everyone is accepting this bioinformatics work. And because we are performing better, our result is having high level of resemblance with wet lab experiments, or even the in vivo and in vitro experiments as well. So this acceptability is again an advancement, right? For an example, US EPA. So US EPA is United States Environmental Protection Agency. So USCPA provide some licensing to the chemical compound for any kind of maybe fertilizer or something utilization in US area. So they are at the preliminary screening using in silico tools, SAR based, QSAR based tools for giving the approval, not the all toxic compound, but in general compounds, chemical compounds. This is a big, trust in this computational uh, approaches and computational tools. Anyway, so CAD uses two main modeling strategies. We all understand direct designing and indirect designing. We will study about this later on. So, and major approaches of CAD is structure-based drug designing and ligand-based drug designing. Structure-based designing is basically based on target structures, screening based on target structure, target protein structures, drug target structure, right? And ligand-based drug designing is usually the screening based on ligand structures, right? Pharmacophore and QSAR is the best example of this uh, categories, right? QSAR, I just named it for USCPA. So QSAR is again one of the technique, is very reliable, and currently we all are, at least listen about the AI and ML model, artificial intelligence and machine learning model. So QSAR is also a model-based study where, I mean, quantitative structure activity relationship is the name of this QSAR. In this QSAR technique, we also create a model, um, and this is regression-based model. Statics में आपने पढ़ा होगा regression. We talk about the regression, then regression model is basically prediction of unknown parameters based on some known parameters. For said structure of a molecule is known, then based on their structure, we predict the activity. I mean, this is like that कि हम लोग किसी की शक्ल देख के या किसी की बॉडी देख के और प्रेडिक्ट करते हैं कि ये क्या काम करता होगा, नहीं. कभी कोई देखा कि कोई बाउंसर जो है वो बहुत पतला दुबला सा है, नहीं. कोई बाउंसर है तो वो भी प्रेडिक्ट दैट कि वो काफी फिट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए.
तो सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड एक्टिव है तो उसकी पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, कौन से फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, कौन से उसके बैकबोन होने चाहिए, कौन कौन से उसमें रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर के इन क्राइटेरिया को मानक मान करके और उसको हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं इस क्यूएसएआर में, और फिर उसकी बेसिस पे हम एक्टिविटी प्रेडिक्ट करते हैं अननोन मॉलिक्यूल्स की जिसकी एक्टिविटी नोन नहीं है। और शायद हमने आइडेंटिफाई किया कि मेटा पोजीशन पे अगर मीथेन ग्रुप है तो उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी और वो ज्यादा इफेक्टिव ड्रग। तो जब उस मॉडल को हम स्क्रीन करेंगे तो अभी तो एक लेक्चर में हूँ। So this is the QSAR, and advancement in QSAR is as well like 1D QSAR, 2D QSAR, and 3D QSAR. So 3D QSAR is COMFA and COMSIA based. Maybe in this I mean series, if QSAR is the option, then we will try some QSAR things as well. Right. Moving forward, many bioinformatics tools, as I told you, that advancement in not only the quality of the tools, rather the number of tools as well. Quantity, we have plenty of options. So, commonly used database searching tools in evaluating similarity between biological sequences are BLAST and FASTA, Cluster W for alignment, Transmol and Swiss PDB Viewer for visualizations. These are the few tools. And similarly, the protein structure prediction tools have been from Swiss model server to modular to AI-based tool nowadays AlphaFold. We will discuss AlphaFold, and maybe I will try to give you hands-on on AlphaFold as well. Comparative study so that you can understand difference in different techniques, right? So usually earlier we start with the modelers and Swiss model online server. Many of you use this Swiss model server, and now we shifted to the AI based, artificial intelligence based AlphaFold, right? So there are also microarray analysis tools like CIMer, Splice Miner, Match Miner, Go Miner, and many more. So basically, in these slides, I would like to show the diversity of different tools. And nowadays, as I told you, that advancement in the graphics and speed of the computers as well. So many different tools. I mean, advanced version of the tools. For said, अगर हम बात करें ब्लास्ट की बात करें तो जो पहले उनके रिजल्ट थे उसमें उनकी टाइम जो लगता था वो और जो क्वालिटी थी वो दोनों इम्प्रूव हुआ है काफी। वो अगर आप इस फील्ड में 10 साल 15 साल से भी 10 साल से भी मिनिमम है 10 ईयर से भी है तो इस 10 ईयर में भी आप इस एडवांसमेंट को जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। जो न्यू कमर्स हैं शायद वो इस चीज को नहीं फील कर पा रहे क्योंकि उनके लिए तो अभी सब कुछ एआई एंड ऑल सब कुछ अभी आया है। बट अगर 10 साल से भी इस फील्ड में है तो आपको एग्जिस्टिंग टूल में भी डिफरेंसेस फील होगा। So even about the scripting languages for software packages, so scripting languages are important tool in जिसको हम scripting को coding language बोलते हैं, programming बोलते हैं। So scripting languages are the important tool in present day applied computing search. These are easy to understand with a strong string process ability and flexible syntax and are object oriented natures. Many softwares like Perl, Python, R, Ruby, and many more programming available, C, C++, Java, PHP, many tools are available. So nowadays, even the programming and coding become the easy. There is a two things that make it easier. Number one is Google, and number two is ChatGPT. पहले जब गूगल आया तो कोई भी कोड है अगर उसमें कोई एरर आ रहा है आप एरर जो है कॉपी करते थे गूगल में और पर्सपेक्टिव जो
सॉल्यूशन है वो गूगल से आपको मिल जाता है। जो लोग कोडिंग करते हैं वो समझते हैं। बट अगर हम लोग बात करें और पहले की बात करें जब गूगल और सर्च इंजन इतने स्ट्रांग नहीं थे, तब जो जैसे आप कभी पूरन सिंह सोलंकी सर से बात कीजिएगा, जब ये लोग कोडिंग करते थे तो इन्हें लिखना पड़ता था, हर चीज लिख करके और खुद ही ट्रबल शूट करना पड़ता था कोड्स के। बट अब गूगल काफी हेल्प किया क्योंकि लॉबी बढ़ी, यूजर्स की कम्युनिटी बढ़ी, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स थे स्टूडेंट्स के लिए, मैं यूजुअली बोलता हूँ जो कॉमन प्रॉब्लम्स थे वो तो आपको 99% गूगल पे मिल जाता है कि ये एरर आ रहा है, इसका ये सॉल्यूशन है। इवन डीबगिंग तक के, डीबगिंग समझते हैं, बग्स तो समझते होंगे ना। कोड में बग्स होता है मीन्स इंटेंशनली हम एरर क्रिएट करते हैं कोड्स में, और डीबगिंग हम उस कोर्स के एरर को हटाने को डीबगिंग बोलते हैं, बग्स को हटाने की। तो डिबगिंग पहले लोग मैन्युअली करते थे या उसके लिए भी कोड लिख करके रन करते थे। अब आप तो गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा कहाँ गलत है क्या सही है। प्लस में जो इंटरप्रेटेटर हैं और सॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, वो काफी स्ट्रांग हुए, कंसोलर जो है वो काफी स्ट्रांग हुए, तो आपको काफी सारे, पहले ये लोग नोट पैड एंड ऑल पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग करते थे, अब बहुत सारे आगे हैं जो कि कंपाइलर एंड ऑल, जो इजी असेस करते हैं। और नाउ सेकंड थिंग मैंने बोला चैट जीपीटी। So ChatGPT again, a different arena, having a different arena. So, and for students, I announce from here that ChatGPT, using a ChatGPT is not unethical or not a bad thing. It is unethical when you are hiding it. If you are using and citing it, then it is not unethical. So कई लोगों को लगता है कि हम कोडिंग कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो गलत, ऐसा कुछ नहीं है। चैट जीपीटी आपको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, आप करो ना, लेकिन झूठ बोल के मत करो, सच बोलो और करो यूज। तो चैट जीपीटी में तो आपको जो भी कोड करना है, जो प्रोग्राम करना है, आप प्रॉम्प्ट दीजिए और वो आपको कोड लिख के दे दे रहा है। आप उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़े जो मैनुअल चेंजेस हैं वो करके और रन करो कोड को। For an example, I am a teacher as well. So one day I asked my one of the first year student कि चैट जीपीटी से क्या यूज कर सकते हो, तो बोला सर मैं ना कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा आपको। मैं बोला कैलकुलेटर बनाएगा फर्स्ट ईयर के, क्योंकि वो अभी पढ़ा नहीं था काफी सारे, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हम सी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सी से स्टार्ट करते हैं, सी देन C++ ऐसे स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग से। तो बोला मैं कंप्यूटर बना दूँ, कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा। तो he went to the chat GPT and just give some prompt and पूरे कमांड आ गए कैलकुलेटर बनाने के, और उसको उसने रन कर दिया जावा में, और कैलकुलेटर बन गया स्क्रीन पे। मैंने बोला इसके बटन्स के साइज वाइज और कलर चेंज कर दो, वो भी कर दिया वो। सो द थिंग इज दैट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इवन सो prompt that he can create some school or calculator kind of things or some softwares kind of things. तो चैट जीपीटी इज नाउ वेरी इजी। सो ये भी एक एडवांसमेंट मैं मानता हूँ, सपोर्ट कर रहा है ना, इसमें क्या दिक्कत है। कैलकुलेटर बनाना कोई इनोवेशन है क्या? नहीं है। या कोई सॉफ्टवेयर बनाना कोई इनोवेशन है क्या? इनोवेशन नहीं है भाई, सब बना रहे हैं, कोई भी कोड आप यूज करके ही बनाएंगे। तो कहीं से अगर चैट जीपीटी आपको कोड लिखा हुआ दे दे रहा है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके बना ले रहे हैं, तो बढ़िया है ना। टेक्नोलॉजी ऑलवेज come for smoothness of your work, to provide you support and to provide you you know कंफर्ट। कोई भी टेक्नोलॉजी का ही मतलब है, जैसे अभी कंफर्ट ही तो टेक्नोलॉजी, हम लोग बात करें ऑनलाइन मीटिंग जो कर रहे हैं, तो दिस इज ए कंफर्ट टू अस। हम लोग दूर बैठ करके भी पढ़ ले रहे हैं और पढ़ा ले रहे हैं। सो अगर चैट जीपीटी भी हमें टाइम सेव कर रहा है, अब उसी कोड को मैं हाथ से लिखूं या कोई स्टूडेंट हाथ से लिखे और टाइप करता रहे, तो उससे अच्छा है ना वो ले करके वहां से चेंज कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो सो दिस इज अगेन एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी एंड हम आगे और बात करेंगे। चैट जीपीटी एआई बेस्ड टूल है, तो एआई का रोल ड्रग डिस्कवरी में भी क्या क्या है मैं आगे बात करूंगा आपसे। एडम टॉक्स जो हम लोग बात कर रहे थे, एडमिट टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन की। तो टॉक्सिसिटी इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ड्रग डिस्कवरी, बिकॉज टॉक्सिसिटी प्रेडिक्ट करने के लिए एनिमल यूजेस की जरूरत पड़ती थी। टॉक्सिसिटी आप कहाँ प्रेडिक्ट करेंगे? आप कहीं ना कहीं एनिमल पे ही अप्लाई करके, जैसे लेबोरेटरी एनिमल्स जो हैं, गिनी पिग्स हैं या माइस है, इन पे ही तो आप ट्राई करेंगे ना।
तो उसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज काफी सारे थे, काफी सारे अप्रूवल आपको लेने पड़ते थे। और एज ए ह्यूमन बीइंग ये इथिकली भी थोड़ा था कि आप किसी चीज के लिए बहुत कंफर्म नहीं है, छोटी सी चीज को कंफर्म करने के लिए आप किसी भी एनिमल के जान ले ले रहे हैं। अब ठीक है, जहां मजबूरी है कि हमको वैलिडेट करने के लिए यूज ही करना है, हमें फाइनल हो चुका है कि नहीं ये वर्क करेगा ड्रग, और लास्ट स्टेज में हमें क्लिनिकल ट्रायल में उसे यूज करना है, तो ठीक है उतना अपन इन्वायरमेंट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और होप कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट भी हमें उतना सपोर्ट करे। लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि कोई आइडिया ही नहीं है, जस्ट रैंडम सिलेक्शंस के लिए हम किसी एनिमल की जान ले रहे हैं, सो दिस इज नॉट फेयर। सो अगर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी में जो सबसे ब्यूटीफुल थिंग्स मुझे लगता है वो है ये टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन टूल है, क्योंकि एनिमल्स को बिना हार्म पहुंचाए हुए और हम टॉक्सिसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड plenty of online tools is available for toxicity prediction like Swiss Adam and all. एक दो का मैं डेमो दूंगा। और यूएससीपीए का भी मैंने एग्जांपल दिया कि वहां भी वो लोग सार बेस्ड, सार मीन्स स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बेस्ड, क्यूएसएआर क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन बेस्ड टूल्स को यूज कर रहे हैं एपीए। एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ admit predictor, admit modeler and all for toxicity predictions, right? Commonly used approaches for CADD. This is a structure-based and ligand-based approaches, obtaining target protein structure, identification of the active site, construction of the compound database, pharmacophore modeling, QSAR, molecular shape-based superpositions, virtual screening, scoring analysis, pains remove, and ADAM predictions, bioassay, drug determination. These are the process of commonly used CADD approaches, means computer-aided drug discovery. And believe me, at every step of this schematic diagram, there is a advancement of technology, and there is a new addition of tools for drug discovery. Shiva Bhargavi raised her hand. I will take your query after a few minutes, right? These are the model structure, means protein model structure, target protein model structure. Few of from my students' publications and all. And these are the active site are binding pocket predictions tool, and this result is from CAST-P server. CAST-P is for active site predictions, and these are the Ramachandran plot prediction tool. Many tools are available like ProCheck and Rampage server, and very simple. I mean, just click away this calculation. Although if you go to calculate this parameters manually, so it's very tedious and complex. But nowadays, this is very simple with the computer. Yes. Now the AlphaFold. So AlphaFold is, you know, major move of basically the structure biology, protein structure biology, or protein structure predictions, or drug target predictions area, because AlphaFold changed the structure study of especially of the protein structure study in a dynamic way, very accurate, very fast, and very reliable. Although I mean many groups is still accepting slowly, but now AI is non-stoppable. इसको stop नहीं किया जा सकता है in any field. So AlphaFold is the AI based tool for protein structure predictions, right? AlphaFold is a product of Google and EMBL. So Google, all of you know about the Google, is a very renowned IT company, and Google developed this Alpha. These are the chemical interactions prediction predicted by some tools, and protein-protein interactions using string tools, right? Stitch and string two tools that is used. One used for chemical structure prediction, another is used for
protein structure predictions, right? These are the molecular docking result. Molecular docking, if we understand, then molecular docking is basically study of interactions of any two molecules. Maybe one is protein, another is chemical, or maybe one is protein, another is peptide. So docking means interactions of any two molecules. Any of them, maybe chemical. I believe this is of um, chemical and protein interaction study. And these are the same interaction represented in a different way. So one is the from leak plot tool, another is from maybe Autotalk. So you can see the difference in the uh, graphics and difference in the information shared. I mean, here the interactions is um, shown in a many deep way, like even the distance is mentioned here, other hydrogen bonds are mentioned here, but here just simply interaction is shown. So another, this is the docking of result, and this one is the active site prediction. So these two result comparatively shows that validation part, that here is the active site, and again this molecule is bind at the active site. So confirm from the two different tools. This is the molecular dynamics simulation study result, RMS and RMSD. Well, I hope this video will play. Okay, so this video is not playing. There is some file issue. So this is a simulation study. In simulation, basically we study the dynamics of molecules, interacting molecules. In docking, just we study the interactions, and in simulation we check the dynamics, means how these molecules are moving. So again, this is a validation part of the experiments. Nowadays, another is MMPBSA. So MMPBSA stand for molecular mechanism mechanics, Poisson Boltzmann surface area, is again nothing but free energy calculations. So MMPBSA approach represent the post-processing method to evaluate free energies of binding or to calculate absolute free energy of molecule in solutions. So again, the free energy, by calculating free energy, you can predict many things like how strong the binding is, how reliable binding is, and any interactions stability can be predicted using MMPBS study. Now we talk about the recent advancement in computer-aided drug discovery. So other than the advancement in the existing tools and existing approaches, who new things added in current time or recent time, or we can say in this era, that is AI and quantum computing. AI are machine learning and quantum computing. So we will discuss these two things. Just I will take a 2 minute break and coming to you.
So before moving to AI and machine learning and quantum computing things, just we look into the market of computer-aided drug designing, booming frontier. The global CAD market is experiencing unexpected growth driven by technology innovation and surging investment in computer computational approaches to drug development. See, if there is an investment, then there is a chance of growth, or either this is growing or there is a chance of growth. कोई भी अपना पैसा तभी लगाता है जब उसे उस टेक्नोलॉजी में उस फील्ड में ग्रोथ या तो होता हुआ दिख रहा होता है या होने वाला हो रहा होता है तभी अदरवाइज नहीं लगाता है तो इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट इज इन्वेस्टिंग 45%, structure based design 55%, and cancer research is 35%. So regional dynamics with North America command the largest market share 45%. Asia Pacific region is emerging as a fastest growing territory and fueled by increasing R&D investment and expanding pharmaceutical infrastructures. Segment growth, AI and machine learning based design represent the fastest growing segment in the drug discovery, while infectious disease applications are rapidly gaining momentum alongside cancer research priorities. तो इस स्लाइड में मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक तो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स जो हैं उनकी जो शेयरिंग है इन्वेस्टमेंट है वो 45%। मीन्स अमेरिका आज भी आपके कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी में एक मेजर इन्वेस्टर है। ठीक है, मतलब हम पीछे नहीं है, एशियन कंट्रीज भी कर रहे हैं इसमें, बट स्टिल वी आर लेकिंग बिहाइंड। रिसेंटली आई हर्ड दैट Indian government approved 6,000 millions for quantum infrastructure development. So, and AI and ML is the key of even the government plannings and government budget as well, cabinet planning center budget. So nowadays, even India is investing lots of in this promising technology like AI ML. And almost all growing universities are institutions and organizations of science opening one AI and ML infrastructure facility or maybe department or segments. So AI and ML is even common in Indian market as well. Second thing is structure-based drug designing. So 50% is 55% is in structure-based drug designing instead of ligand-based drug designing. ने आपको स्टार्टिंग में दो कैटेगरी ब्रॉड कैटेगरी बताया था, स्ट्रक्चर बेस्ड एंड लिगेंड बेस्ड ड्रग डिस्कवरी. 55% स्टिल बिलीव इन स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, राइट, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक है, लोग भी इसमें ज्यादा काम कर रहे हैं. जितने भी स्ट्रक्चरल इवन जो बेट लैब एक्सपेरिमेंट्स के लोग हैं वो भी प्रोटीन वगैरह पे काम कर रहे हैं, वो इस एरिया में ही. Cancer is a major challenge, even more into the developed country, and now India is not far away from this cancer status. So 35% research is still in the cancer area. But nowadays infectious disease is another the growing segment. आप लोगों ने न्यूज में शायद सुना होगा कि ट्यूबरक्लोसिस इज स्टेपिंग बैक. ट्यूबरक्लोसिस के केसेस कोविड के बाद से फिर से बढ़ने लगा है. And global burden of disease report 2024 as well, sorry 2023 as well report that um, tuberculosis is again at the top of um, any infectious disease nowadays. ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन की हम बात कर रहे थे कहाँ, तो हम ट्यूबरक्लोसिस को हटाने की बात कर रहे थे इंटायर ग्लोब से, अपने प्लेनेट से. Or tuberculosis is now a stepping line. So infectious disease area is again important. Those who are early researchers, this point is interested, they can choose their area based on their uh, skills, maybe infectious disease and AI and ML. And cancer as well. Because obviously, funding in a way where demand is more. Either research funding or government funding or industrial funding.
So AI, AI stand for artificial intelligence. I don't think any one of you haven't heard about this AI, बिकॉज ये काफी कॉमन वर्ड हो चुका है। इवन हिंदी न्यूज़पेपर में भी एआई पे कई एडिटोरियल्स एंड ऑल आपने देखा होगा। और कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई भी चर्चा है, उसमें एआई की बात हम जरूर कर रहे हैं। और अब एआई सिर्फ हम रिसर्चर या एजुकेटर के लिए नहीं, बल्कि अ, कई अदर जो नॉर्मल, जैसे जो मोबाइल पे रील और वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी है। कई सारे एआई की टूल्स है जो कि फोटो एडिटिंग एंड ऑल, वीडियो एडिटिंग, मर्जिंग एंड ऑल में यूज कर रहे हैं। एंड एआई का एप्लीकेशन सिर्फ ड्रग डिस्कवरी में नहीं है, वो आर्ट्स से लेकर के पेंटिंग एंड डिजाइनिंग से लेकर के, और आपके एडवांस रिसर्च, ड्रग डिस्कवरी, इवन द अदर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल एरिया में भी इसके। आप एआई असिस्टेड व्हीकल्स की बात आप रिसेंटली सुने होंगे, अब इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। और इवन सिंपल कार भी जो है वो भी एआई असिस्टेड व्हीकल। So artificial intelligence has evolved from an experimental tool to a fundamental platform transforming every stage of drug discovery from target identification to compound optimization. हमने आप फर्स्ट स्लाइड में शो किया था टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन या कंपाउंड ऑप्टिमाइजेशन। सो इंटायर रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंट में एआई के यूज है। टारगेट प्रेडिक्शंस में अगर हम लोग बात करें तो अल्फा फोल्ड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। So AI algorithm identify novel therapeutics target by analyzing vast biological data set, uncovering disease mechanism previously hidden from traditional approaches. AI can identify any pattern even more accurate and more faster than any other computer tools or even as a human being. So this is a very important things for drug discoverer, researcher working in the drug discovery, because AI can identify patterns easily. Virtual screening machine learning model screen millions of compound in silico, dramatically accelerating hit identification by reducing experimental cost. ठीक है। सो वर्चुअल स्क्रीनिंग में जो हम बात कर रहे थे, पहले हम वेट लैब में एक्सपेरिमेंट पाइपेटिंग से करते थे, बाद में डॉकिंग के थ्रू करने लगे, एंड नाउ मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल स्क्रीनिंग मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल dramatically. Again, the lead optimization, so deep learning enhance compound property predictions, guiding medicinal chemists toward molecule with optimal drug-like characteristics. लीड ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हम मल्टीपल पैरामीटर्स पे चेक करते हैं ड्रग्स को कि वो कितना परफेक्ट है एज पर आवर नीड एंड एज पर आवर हाइपोथेसिस। और जब हम कहीं भी मल्टीपल पैरामीटर पे बात करें तो वहां पे एआई और डीप लर्निंग मेथड्स आर वेरी क्रूशियल, राइट? सो these are the three step critical step where AI can change the entire game. Quantum computing meets AI, the hybrid revolution of 2025. Quantum computing based on the quantum mechanics. आप में से कई लोगों ने फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑल पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो now quantum computing is also associated with AI. In year 2025 marks pivotal inflection point where quantum computing and artificial intelligence converge, creating hybrid platform that fundamentally transform drug discovery paradigm. In silico medicine, quantum leap screened over 100 million molecules using quantum classical hybrid model, successfully identify highly potent KRS inhibitors, target one's demand undruggable, right? Microsoft Majorana one chip is based on quantum computing methods and AI included in that. Model medicine Galileo is again achieves remarkable 100% hit rate
identifying novel antiviral from such space containing trillions of potential molecules, demonstrating the power of AI quantum system. Right? So AI and quantum is going to revolutionize the drug discovery. Right? Generative AI breakthrough guided multi-objective design. So IDOL Pro platform represent the quantum leap in a structure-based drug designing, combining cutting-edge diffusion model with sophisticated multi-objective optimizing. Performance advantage: produce ligand with 10 to 20% superior binding affinity. Generative novel drug-like molecules 100%. Dramatically reduce cost while maintaining high synthetic accessibility. Integrated admit toxic. Generative AI का मतलब समझते हैं? Generative AI is kind of things when you generate something new जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और आप उसको एआई के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। फॉर सेट आप कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं जो ऐसा है नहीं, एक्चुअली नेचुरली है नहीं। सो दिस इज जनरेटिव एआई। हमारी मेरी आप 100 1000 1500 फोटो लेकर के और आगे 10 साल बाद मैं कैसा दिखूंगा वो आप जनरेट कर रहे हैं, जो कि है नहीं ना फ्यूचर में। हाउ आई विल लुक्स लाइक इन आवर ओल्ड एज नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, बट जनरेटिव एआई कैन प्रेडिक्ट इट। एंड आप देखे होंगे कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें लोग फॉर फन फन के लिए हम प्रेडिक्ट करते रहते हैं। हालांकि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज हैं इस तरह के टूल्स में। सो आई रिकमेंड टू यूज वाइजली दिस काइंड ऑफ टूल्स और जनरेटिव एआई टूल्स, राइट। एंड सम टाइम ये ऑफेंसिव भी है। आपको सेट आप हमारी कोई इमेज लेकर के और उसको कुछ अबिसिव अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी है। AI is wonderful, but use it wisely because it is very dangerous when you will not handle it properly. So अगर हम conclude करें क्वांटम कंप्यूटिंग एंड AI को, तो इसमें स्पीड एंड एनालिसिस ये दोनों एट द हाईएस्ट पॉइंट है। और ये इसके एडवांटेज है, जितनी ये बेनिफिट्स इसके लिखे हुए हैं, एडवांटेज लिखे हुए हैं परफॉर्मेंस के, वो दो ही क्राइटेरिया पे है, इनकी एक्यूरेसी एंड स्पीड की बात हम कर रहे हैं। वैलिडेशन ऑफ टारगेट अगेन सेट्स टेक्नोलॉजी, mass spectral integration, bridging discovery to clinic, and validation success. So, I mean, these are the even the wet lab experiment tools are experimental tools are machines now integrated with AI and all, so they can analyze in a better way, right? AI expanding role beyond discovery. So, clinical trial optimization, AI algorithm design more efficient trial, predict patient outcome, and identify optimal enrollment criteria, reducing failure rate and accelerating approval. क्लिनिकल ट्रायल्स में कई सारे चैलेंजेस हैं, नहीं? अब फॉर एग्जांपल हम किसी एक एज ग्रुप के लोगों पे ट्रायल करना चाह रहे हैं, तो एज ही एक पैरामीटर नहीं है। एज के साथ में उस पर्सन की हेल्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी रेसेस क्या है, उसकी बॉडी कंडीशंस क्या है, उसकी न्यूट्रिशन कंडीशन क्या है। कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कि इफेक्ट करता है ड्रग के रिएक्शन पे एंड मैकेनिज्म पे। सो क्लिनिकल ट्रायल में एआई बेस्ड टूल जो है वो ड्रग फेल्योरेंस को कम करता है। कई बार क्या होता है कि ड्रग बहुत अच्छा है, बट हमने जो क्लिनिकल ट्रायल में जो भी एनिमल लिया या मॉडल लिया, जो भी ह्यूमन मॉडल या एनिमल मॉडल लिया, उसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो परफेक्ट नहीं है। जो पहले से ही 10 बीमारी से बीमार है और उस पे हम अगर कोई टीबी या कैंसर की दवा चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, भाई उसके रिजल्ट तो एज यूजुअल नहीं आएंगे ना, जो एक्सपेक्टेड है उस तरह के नहीं आएंगे, तो ऑलरेडी वो पहले से बीमार है। तो अब किसी की जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। आपने 100 पीपल को या 50 पीपल को एज ए क्लिनिकल ट्रायल मॉडल सेलेक्ट किया और उसकी बॉडी वेट, उसकी हाइट, उसकी रेसेस अब अलग अलग हैं, तो ड्रग की इफेक्टिवनेस कम होगी, रिजल्ट जो है वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं आएगा।
अब तो आपने आप में से कई लोगों ने सुना होगा, पर्सनलाइज मेडिसिन की बात हम कर रहे हैं, इंडिविजुअलाइज, है ना। पर्सन टू पर्सन में मेरे लिए ड्रग्स जो है वो अलग होगा और आपके लिए ड्रग्स अलग होगा। ऐसा भी वो है कि डिफरेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। Drug repositioning. So machine learning uncovers new therapeutic application for existing drug. Drug repositioning या repurposing आपने सुना होगा, means existing drug for said paracetamol is for fever, है ना, we usually use for fever and pain paracetamol. So if paracetamol can be used for other diseases as well, or paracetamol can be used for other complications as well, so this is called drug repurposing. Machine learning approaches is very useful for drug repurposing. ड्रग रिपर्पसिंग के जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि अवेयर है ना आप, हम और आप तो शुरू से ये जान रहे हैं कि पैरासीटामोल इज फॉर फीवर, बट इट मे बी इट कैन बी यूज फॉर अदर ट्रीटमेंट एज वेल। सो मशीन लर्निंग मॉडल हेल्प इन दिस। ड्रग रिपर्पसिंग में बेनिफिट है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग है, मीन्स उसके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, उसके अप्रूवल हो चुके हैं, आपको बस उसके दूसरे यूज बताने हैं, नए यूज एप्लीकेशंस बताने हैं। तो काफी सारे अप्रूवल, काफी सारे क्लिनिकल ट्रायल से आप ऑलरेडी बच जाएंगे ड्रग रिपर्पसिंग। आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस की टाइमिंग है वो कम हो जाएगी। तो रिपर्पसिंग, ड्रग रिपर्पसिंग इज वेरी गुड। आई हैव पब्लिश्ड few papers on drug repurposing as well. So data integrations, successful AI implementation require robust biological data sharing fragment framework and clear intellectual property agreement across collaborative network. कोर्शेड एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिसर्चर्स के लिए कि मैं इंडिया में हूँ, अफ्रीका में हूँ, चाइना में बैठा हूँ, बट यूएसए का क्या आईपीआर है, मतलब पेटेंट का क्या रूल है, या चाइना का क्या है, साउथ अफ्रीका का क्या है। अब वो हमें अलग अलग लॉयर से या लॉयर के थ्रू या बहुत सारे बुक्स पढ़ के और हमें वो करना पड़ता था, डेटा इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता, या क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या सेटअप है, रूल है। तो उसके लिए डेटा एआई काफी आपको हेल्प कर रहा है। आज के डेट में आप देखो, पहले आपको हर चीज को कीवर्ड के साथ सर्च करना पड़ता था। आज आप गूगल में जस्ट सर्च करो कुछ भी, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा वो शुरू में ही बता दे। फॉरसेट अगर हम लोग बात करें कि कोई टॉपिक से आपको पढ़ना है, मे बी फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, पहले आपको बुक्स ओपन होते थे, नोट्स ओपन होते थे, अब आपको वो, आप उसको बता दीजिए इस तरह का नोट चाहिए, 2 पेज का, 3 पेज का, आपको गूगल ही करके दे देगा पूरा। और आप, ब्यूटी ये है कि आप अगर देखेंगे तो जितने टेक्स्ट बुक से आप डेटा लेंगे वो सारा उसी 2 पेज या 3 पेज के गूगल सीट में आपको समराइज मिलेगा। तो एआई का ये रोल है। सिमिलरली अगर आप कहीं बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल देखना चाह रहे हैं, तो वो भी इस तरह से एक ही जगह पे सारे डेटा इंटीग्रेशन से इंफॉर्मेशन आ रहा है। सो कॉस्ट एआई, 30% ड्रग जो अभी डिस्कवर हो रहे हैं वो एआई के हेल्प से हो रहे हैं। एंड कॉस्ट जो है 25 से 50% कॉस्ट रिड्यूस कर दिया है एआई ने ड्रग डिस्कवरी के प्रोजेक्ट। ड्रग डिस्कवरी इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि इसमें टाइम स्पेंड काफी ज्यादा, पहले 12-12, 15-15 साल लगते थे ड्रग डिस्कवरी करने में। 10 to 12 years इज फॉर ड्रग डिस्कवरी। यू कैन बिलीव इट। 10 to 12 ईयर्स में कितनी विजन की जरूरत होती है, कितने मिशन की जरूरत होती है। आज से 10 साल बाद आपको मान लो कोई बेनिफिट मिलने वाला है, आप आज उस पर करोड़ों अरबों क्यों इन्वेस्ट करोगे, है नहीं। तो टाइम जैसे ही ये कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी आया एग्जिस्टेंस में, एआई आया, तो जो टाइम स्पेंड कम हुआ उसमें 2 साल बाद अगर मुझे पता हो कि मुझे $100 मिलियन मिलने वाला है, ये ड्रग मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, तो आज मैं उसमें 2, 4, 5, 10 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन मुझे पता ही नहीं हो कि 15 साल बाद मिलेगा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता था पहले, और 15 साल बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो सारा एक्सपेरिमेंट बैठ लैब में करने हैं। सो इज वेरी कॉस्ट रिड्यूसिंग है एआई इज। 30% इज डक फ्रॉम एआई एंड ऑल। कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम and funding momentum from different platform. Future is now embracing quantum enhanced drug discovery, expanded chemical space and all. So we discussed a lot about the quantum and all. We are talking about AI and machine learning. So here I would like to
define these things. Artificial intelligence, any technique which enable computers to mimic human behavior. This is uh, artificial intelligence. And machine learning is a subset of technique, AI technique, which use a statistical method to enable machines to improve with experience, right? And deep learning is subset of machine learning, which make the computation of multi-layer neural network feasible. These are the three terms. थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल फार्मा एंड ड्रग डिस्कवरी में. So artificial intelligence has transformed industries around the world and has the potential to radically alter the field of healthcare. Artificial intelligence is changing the way we look at this world today. And according to the report, around 121 health AI organization made 2.7 billion and 200 deals. This is around 4 year old data. So nowadays it is again much higher than this. And this is the artificial intelligence, that is predictive analysis, natural language processing, machine learning, and image analysis. And these are the different tools, already existing tools that is available for drug discovery, like IBM Watson and chatbot, Inset, and Deep Get uh, Gestalt, right? AI assisted protein folding. So DeepMind AlphaFold again, using for 3D modeling, जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर फोल्डिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं. और प्रोटीन फोल्डिंग स्टडी में भी अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस के लिए काफी इसमें स्टडी एआई बेस्ड में. एंड वॉटसन आईबीएम का प्लेटफॉर्म है. आईबीएम, वी ऑल आर अवेयर अबाउट द आईबीएम. सो वॉटसन इज द प्लेटफॉर्म फॉर ड्रग डिस्कवरी. And artificial intelligence is also used for antibiotic development. MIT researchers use a machine learning algorithm to identify a drug called halicin that kill many strain of bacteria. Halicin prevent the development of antibiotic resistance in E. coli, while ciprofloxacin did not. Right? We will talk a bit about quantum computing. So traditional approaches are structure-based drug designing, ligand-based drug designing, and virtual screening. We already discussed this. Limitations about of these techniques are relies on approximate quantum mechanics model like force field and all. Can be computationally expensive for large system. Struggle accuracy or modeling electron correction and all. So these are the some technical challenges for this. I mean, currently using our previous use techniques. These are the limitations, not a drawbacks. जैसा मैंने बोला कि ये एडवांसमेंट है अदर थिंग्स टेक्निक का, दैट डजंट मीन दीज आर द आउटडेटेड वन. ये लिमिटेशंस हैं, बट इसके बेनिफिट भी हैं. अब क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आपको हाई एंड कंप्यूटर भी चाहिए, हाई एंड सर्वर भी चाहिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपके पास. एआई के लिए भी आपके पास ट्रेंड मैन पावर होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर होना चाहिए. तो वो उनके भी लिमिटेशंस हैं, राइट? So this is not outdated. Limitations is there, right? We talk about the quantum computing. So this is a new frontier. Quantum computing uses quantum bits. Qubits हम लोग इसको बोलते हैं. Usually जो हम bits use करते हैं कंप्यूटर में 0 and 1. So quantum computing is usually the faster than existing computer models, and this allow quantum computer to explore vast molecular configuration exponentially faster than classical. तो कंप्यूटर्स में तो ये एडवांसमेंट हमेशा होते रहे हैं. नहीं, पहले कंप्यूटर और स्लो थे, अब और धीरे धीरे ग्रेजुअली आई फाइव आई सेवन एंड नाउ आई मीन क्वांटम साइज वाइज एंड स्पीड वाइज कंप्यूटर में काफी रिवोल्यूशन. दैट वाइज द लास्ट सेंचुरी इज फॉर द नोन फॉर कंप्यूटर
research. So quantum algorithm reveal the drug discovery, variational quantum epigen solver, quantum phase estimations, quantum machine learning, quantum annealing. So these are the few tools. Applications in drug discovery, exact quantum mechanics modeling, quantum quantum algorithms simulate folding pathway, quantum annealing optimize docking configuration, quantum simulation of reaction kinetics, and quantum enhanced MLN richer feature of space. Right. Current progress and challenges. Companies like IBM, Google, Quantum AI, and D-Wave, Qubit Pharmaceutical, and Jepta Computing are developing quantum workflow. Early quantum simulation of a small molecule have been successful. Hybrid workflow, classical plus quantum are now common, combining quantum circuits with classical machine learning. तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग इज स्टिल अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बट स्टिल द हाइब्रिड मॉडल इज in the market and very soon maybe in 3 year or 4 year quantum computing will be the common like AI जैसे आज AI है ना कॉमन हो गया आज से अगर 5 साल 7 साल बाद पहले की करें तो इतना AI कॉमन नहीं था हर जगह नहीं था वैसे क्वांटम भी आ जाएगा तो अभी थोड़ा ये नया है इसमें भी ट्रेंड मैन पावर भी कम है क्वांटम में बट आने वाले टाइम में है तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी से थोड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना और कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज अगर अवेलेबल हैं तो वो जरूर करें क्योंकि आने वाले टाइम में ये काफी यूजफुल हो एंड आने वाले टाइम ऐसा नहीं कि 10 साल बाद जस्ट आफ्टर 2 year और 3 year चैलेंजेस हैं हार्डवेयर लिमिटेशन जो मैंने अभी पहले बताया कि जितना फास्ट एंड जितने एडवांस टेक्नोलॉजी लेंगे उतना ज्यादा आपको एडवांस हार्डवेयर चाहिए मतलब अच्छी कंप्यूटर चाहिए एरर करेक्शन रिमेन ए मेजर हर्डल जो जितना फास्ट होगा उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं और अभी चूंकि जैसे मैंने बोला है डेवलपमेंट स्टेज में है तो अभी इस पे रिसर्च काफी सारे चल रहे हैं तो इसमें एरर भी आएंगे आपको याद हो कि अल्फा फोल्ड भी जब फर्स्ट टाइम आया था मार्केट में तो एआई टूल्स भी जब फर्स्ट टाइम आए थे इनमें भी काफी एरर थे बट बहुत शॉर्टली ये पॉपअप किया आपने एरर को एआई के साथ तो ये भी था कि ये खुद ही इतना स्मार्ट था कि ये अपने एरर्स खुद ही पहचान के और खुद ही करेक्ट करता चला गया तो आप देखेंगे कि एआई मॉडल सेल्फ करेक्टिंग है वो खुद ही करेक्ट कर लेता है उसके पास बहुत पावर है एआई के पास खुद ही बड़े डेटा सेट पे वो अपने को करेक्ट कर लेता है स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी भी एक मेजर हर्डल है स्पेशली इन बायोसाइंस के लिए क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं बायोसिस्टम में और अभी जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स एटम्स जो हैं हाइड्रोजन है लिथियम है इनके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग सक्सेसफुल है बट अभी उसके लिए काफी वो है सो आने वाले डिकेड्स में क्वांटम कंप्यूटिंग विल बी वेरी थैंक यू दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड नाउ सेशन इज ओपन फॉर queries and questions and then I will give you few times for just exploring whatever I discussed today. So anyone may ask if they would like to ask something.